अरे नमस्कार सत श्री अकाल आदाब आइए बढ़िया टॉपिक है आज राइडिंग गियर when to upgrade why to upgrade and when not to waste your money. I have wasted a lot of money on riding gear and accessories, so I think I am capable enough of guiding people on the prerequisites on deciding when to upgrade, why to upgrade, and when not to waste your money. Yeah. Quick question. What's more important? Riding safe or looking cool? Trick question. Because if you're not riding safe, then you won't be able to even answer this question. Honestly, when I started riding, I had a crappy helmet, my first helmet, my Himalayan 411. Gloves as thin as paper, एकदम सस्ते वाले, राइट. बट मैंने सोचा यार कि चल जाएगा काम, क्या ही ज़रूरत है ज़्यादा महंगे राइडिंग गियर खरीदने की, जो आई थिंक 90% ऑफ न्यू बाइकर्स थिंक कि 20,000 या 25,000 का हेलमेट क्यों ले, सिंपल अपना 2-4 हज़ार के स्टील बर्ड वेगा या SMK वगैरह से काम चला लेते हैं यार, है ना. बट ये सोचने के बाद आई वेंट ऑन माई फर्स्ट हाईवे राइड विद द ग्रुप. सुबह 5 बजे, कड़कती ठंडी, हाथ जम जा रहे, विंड बफेटिंग से हेलमेट फड़फड़ा रहा, बगल से ट्रक या बस गया तो फट जा रही. सो व्हाट टू डू. एंड तब जाके समझ आया कि एक कूल राइडर दिखने की जगह राइडिंग गियर शुड फोकस ऑन a lot of varying stuff. Now, one of my good friends, Yasser Motozoomer, has made innumerable videos about riding gear because he has done that absolute in-depth research about it, ki what's good, what's bad. Now, here I am here to tell you when to upgrade and कब अपना पैसा बचा के रखना चाहिए. कि ऐसा नहीं कि भाई आप एक्टिवा पे हैं एंड कौन सा हेलमेट कंपनी है यार, नाम क्यों नहीं याद आ रहा, अराई, कि आप एक्टिवा पे हैं और अराई का हेलमेट पहन के घूम रहे हैं. ऐसा भी नहीं करना है, ज़रूरत नहीं है ना फ्री फंड का. हाँ, पैसे आपके पास बहुत सारे पड़े हैं तो ले लो भाई, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जितना हो सके देख के भी चलना है अपना पॉकेट भी. राइडिंग विदाउट बिकॉज राइडिंग विदाउट प्रॉपर गियर इज ऑल्सो लाइक प्लेइंग क्रिकेट विदाउट द एल गार्ड. एक गलती, एक मिस टाइम शॉट एंड आप हो गए कभी भी बच्चे ना पैदा करने लायक. नाउ here's the thing about riding gear. It's not just for your looks. Remember that first. It's your first line of defense between you and the tarmac. The tarmac is always there to kill you. One small mistake and you're kissing the tarmac and you're kissing your life goodbye. Be it as a rider or life as a whole. How many accidents have we seen? And it may not be your mistake as well. That's the biggest part. It can be someone else's mistake that has caused you to have a crash. And suddenly, that expensive helmet or that expensive jacket with a few extra, what do you say, or a better armor doesn't feel that expensive anymore. And good riding gear isn't just about feeling safe as well. It's about feeling comfortable as well. For example, a better helmet, for example, the Scorpion Exo Air has such good fit and acoustics inside that the wind buffeting is very low. So for touring, most of the time, I prefer that one.
not just helmet but the rest of your gear as well, if it's of good quality, it will ensure that you are comfortable while riding, be it wind noise, be it cold, be it the heat. तो इन्वेस्ट करना तो बिल्कुल ज़रूरी है. अब हम लोग पकड़ेंगे कि कब अपग्रेड करने का है. द बेयर मिनिमम इज सेट. कम से कम एक सो व्हाट द मैथ दैट आई फॉलो नॉर्मली इज 20%. 20% ऑफ योर बाइक्स बजट. फॉर एग्जाम्पल आपकी बाइक अगर 3 लाख की है तो 20% ऑफ इट 60,000 शुड बी टूवर्ड्स राइडिंग गियर. एंड राइडिंग गियर में क्या क्या आता है फिर? हेलमेट, full finger gloves, none of that half cut chapri style, yeah. Full finger gloves, riding boots, not safety boots, and you know which company I'm talking about. Riding pants or at least knee protection and a jacket. 5 things very 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 important. So how do we start upgrading? आप अभी तक नॉर्मल कम्यूटर राइड्स कर रहे थे, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर में भी कभी कभी गलती से लोनावला पहुंच गए या किसी रिश्तेदार के घर चले गए. नाउ यू वांट टू गेट इनटू सीरियस राइडिंग. वीकेंड्स पे दोस्तों के साथ राइड पे जाना है, थोड़ा दूर, 200 300 400 किलोमीटर दूर, सेम डे वापस भी आना है. सो यू विल स्टार्ट स्पीडिंग अप. आपका स्पीड नॉर्मल जो सिटीज़ में 60 के ऊपर नहीं जाता है, 60-80 के ऊपर, it will start touching 100-110. The first thing that you need to upgrade is your helmet. सबसे पहला चीज, भगवान ने सब कुछ दो दो दिया है, दिमाग एक ही दिया है भाई, तो उस हिसाब से चलो. एंड सबसे पहले अपना हेलमेट अपग्रेड करो. दिस इज हाउ आई अपग्रेडेड माई हेलमेट्स. इफ यू सी हियर, स्टीलबर्ड था, स्टीलबर्ड से एक्चुअली ये LS2 वाला लिया मैंने. LS2 वाले के बाद एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग हेलमेट लिया, जस्ट वन वाला. एंड देन आई गॉट द स्कॉर्पियन एक्सोयर बिकॉज जस्ट वन से टूरिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाता है. इट्स ओपन फेस, सो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सब आता रहता है. ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट है, बट टूरिंग के लिए चल जाता है काम. बट स्टिल आई वांटेड अ परफेक्ट, व्हाट डू यू से, परफेक्ट हेलमेट दैट वुड कीप मी हैप्पी व्हेन आई एम राइडिंग. सो फिर आ गया स्कॉर्पियन एक्सोयर. एंड आई डोंट थिंक आई विल अपग्रेड आफ्टर दिस. आई डोंट थिंक अंटिल इसमें से कुछ एक खराब हो जाए. एंड टाइम पास के लिए अगर कहीं पे छोटा मोटा राइड करना है तो फिर आई एम हैप्पी विद दिस रॉयल एनफील्ड वन. नाउ what to check when you are getting a helmet? EC certified is what I prefer. किसी को डॉट पसंद है, किसी को शार्प रेटिंग पसंद है. After doing all my own personal research, I came upon that EC certification is the best. कुछ लोग शार्प प्रेफर करेंगे, but I have read about it that शार्प does not publicly what do you say divulge the testing information कि कैसे टेस्ट किया उन लोगों ने. तो वो भी एक फैक्टर है. कुछ कुछ जगहों पे पढ़ा है मैंने, बट नॉट टू श्योर अबाउट इट. शार्प इज न्यू एज वेल. EC पे बहुत सालों से भरोसा है सबको, सो आई प्रेफर EC. सेकेंडली, सेकेंड पार्ट में बहुत सारा डिबेट हो सकता है. आई वुड प्रेफर यू गो फॉर गुड बूट्स. ग्लव्स हाँ, बट when you are crashing, the most affected part as per research, the numbers say that the most affected part of whenever someone is crashing is their legs. तो legs protect करने के लिए boots चाहिए. Boots at least ankle length, safety boot नहीं, riding boot, at least some protection on the shin, some protection on the ankles and some protection on the toe. Yeah. Third, I'd say gloves. Gloves depends on what kind of riding you do. So जैसे जैसे आपका राइडिंग स्किल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपके ग्लव्स, या फिर जैसे जैसे आपके राइडिंग की वैरायटी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे भी आपके ग्लव्स अपग्रेड होने चाहिए. टूरिंग के लिए गॉन्टलेट ग्लव्स आर गुड. नॉर्मल राइड्स के लिए आई फील गॉन्टलेट ग्लव्स अ बिट व्हाट डू यू से अनकंफर्टेबल for my way of riding. I'm always sometimes standing, sometimes sitting, so I want very flexible gloves. I have Revit के C-Soft gloves. वो basic protection है उसमें, काफ़ी अच्छा what do you say abrasion resistance भी है, so that's good enough for me and gives a very good grip on the throttle
and they have nice grip panels on the fingertips to ensure I'm able to what do you say, accurately use the clutch and brake levers. Good grip on the throttle, and उससे ज़्यादा actually कुछ चाहिए भी नहीं. Ventilation, yes, ventilation is good in these gloves because मेरे को ठंड कम लगती है थोड़ी, so cold climates don't matter to me. On the fourth position, I'll go for jacket. Start with a basic jacket. Depends. See, again, this is how your this is how your upgrading chronology should be like. Yeah, as you keep skilling up, as you keep getting better and faster. Because the moment you start learning how to balance your bike better, the moment you start learning how to stop better, you'll automatically go faster. वो confidence आ ही जाता है अपने आप. अब जो लोग ये सब बिना सीखे फास्ट जाते हैं, उनका आश्रय या हास्य हम सब ने देखा है क्या होता है. बहुत सारे केसेस है, मौत हुई है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, बट दैट्स हाउ यू स्टार्ट अपग्रेडिंग योर गियर. तो जैकेट एटलीस्ट लेवल 1 प्रोटेक्शन होना चाहिए. Now as you upgrade your skills and you divulge towards either of the two, or you do both, like off-roading, touring and track, तो तीनों के स्पेसिफिक महंगे वाले जैकेट्स वगैरह भी आते हैं, सारे गियर आते हैं. तो उस हिसाब से स्पेसिफिकली आप अगर ऑफ रोडिंग जा रहे हो तो उस हिसाब से एक मैश वाला जैकेट लो या फिर आर्मर खरीद लो. If you are towards touring more, then all weather jackets are there, and if you are into track, then full suits are the best. Right. Fifth would be your riding pants. Now, riding pants that come with armor, I have been using Solace for the last 3 years now, 3-4 years now. Solace का बड़ा ही मस्त and cost-effective riding pant है. When I am going for pure off-roading, I am using knee braces and an MX boot to ensure, but the pant is then again normal jersey pants, FXR ke. They have some abrasion resistance and a nice knee patch to ensure that you have grip over the tank. But other than that, the pant itself doesn't have any protection. So I use a very nice knee brace from RXR, and I have a good FXR MX racing boot. यहाँ पे नहीं है, but I would have shown. Yeah. So आपको when you start, now this is the chronology. Yeah, this is the chronology of how you upgrade your gear as per me. Now, when to take these steps, when to start upgrading, that depends on how you are skilling up. You don't need to go with a 30,000-40,000 helmets right off the bat. You don't need to. कम स्पीड्स पे 60-70-80 के स्पीड पे आप चलाते हो नॉर्मली, एक 5-6 हज़ार का हेलमेट भी शुड सफाइस योर रिक्वायरमेंट्स. नाउ जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ता रहेगा, you will gravitate towards certain things. One of them will be either off-roading, the second one can be touring, and the third one can be track. Depending on what kind of bike you have, depending on what kind of riding you want to do, depending on what you like about riding. Yeah. Off-road में जाओगे तो off-road specific gear लेना. Get a nice open face helmet with a lot of ventilation so that you are not, what do you say, you can go through tough terrain without breaking a sweat. I mean, you will break a sweat, but you'll still have enough ventilation to take care of it. Go with body armor for your body protection. These body armors, they really sit tight on you like racing suits, and they offer a lot of protection. Chest protection रहता है, there's back protection, there's elbow, shoulders, and then and the new ones, because the new ones mostly have a kidney belt as well, that saves your innards from moving around too much when you have a crash or something like that, and that has killed a lot of people in the past. That's why it's even compulsory now, and since the last 2 years in FMSI competitions. It was not. I think last year or the year before that, they added this rule of having a kidney belt for off-road races. Gloves wise, off-roading के लिए this length of gloves is perfect because you need that flexibility in your wrist.
touring and track racing, a lot of people go for full gauntlet gloves that come till here. That gives a very nice, how do you say, protection to your wrist as well from moving too quickly in case of a crash. Because ऑफ-रोडिंग में कितना ही फास्ट जाओगे मैक्सिमम 150, बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं तो आज तक नहीं गया, मैं मैक्सिमम 110 टच किया ऑफ-रोडिंग में, वो भी एकदम फ्लैट रैली स्टाइल ट्रैक था. Track is different, touring is different, highway touring is different. You find a nice good patch, you can touch 200, 220 depending on the bike you have as well, and depending on that you should get a good enough glove. Boots. Now boots, I'd say start with ankle length boots at least. City riding के लिए normal मेरे पास Royal Enfield के boots थे, that leather boots with a little bit of what do you say, ankle protection, a little bit of toe protection. That was enough for city riding because my speeds don't exceed 80 when I'm in the city. Short ride के लिए भी बाहर जा रहा हूँ, I ensure that I'm wearing my proper boots. Falco Adventure थोड़े गंदे हैं, but yeah, this is what I use. This length is perfect for touring. Yeah, there are multiple variants. Amarok भी अभी आ गया है इंडिया में. Amarok has made very good boots. कुछ प्रोडक्शन इश्यूज हुए थे उनके बीच में मैंने सुना, बट या Amarok has made good affordable boots. Now boots में भी टूरिंग के लिए ये वाले हो गए. ऑफ-रोडिंग के लिए these, once you go into hardcore off-roading, this is the kind of boot you'll need. काफी गंदा हो गया, सॉरी, ये बिल्ली मेरे कहीं भी घुस जाते हैं और उनके बाल हर जगह रहते हैं फिर. बट हाँ, ऑफ-रोडिंग के लिए ये बूट्स चाहिए दैट डोंट बेंड. या दिस इज माय FXR रेसिंग बूट. काफी दिन से पहना नहीं है मैंने, तो काफी दिन से ढंग से सफाई भी नहीं हुई इसकी, बिल्ली के बाल हर जगह. बट या थिक, fully protected in all the areas. Shin protection देखो इसका इतना मोटा, doesn't bend, and that's one of the major factors about it. Similarly, for if you're going for track racing, I have no damn idea because I'm not into track racing, so I have not researched. Sorry. थोड़ा सा OCD है, जहाँ से सामान निकाला वापस वहीं रखने का, सॉरी. सो या ट्रैक रेसिंग, आई हैव नो आइडिया कि ट्रैक रेसिंग में कैसे बूट्स यूज होते हैं. अपना सूट वाइज देयर आर फुल लेदर सूट्स दैट गिव अमेजिंग अब्रेशन रेजिस्टेंस एंड सम वेंटिलेशन एज वेल. ट्रैक रेसिंग के बारे में उतना ज्ञान नहीं है मेरे को, ना ही उसके राइडिंग गियर के बारे में, सो आई विल स्किप दैट पार्ट. बट या देयर आर एक्सपेंसिव ऑप्शंस ऑन दैट एज वेल. Pants wise, now normal riding pants, they don't offer any kind of what do you say, bend protection. That's what I'd like to call it, bend protection, as in how do I show it? This is your knee, right? This is how your knee folds. Imagine this is your knee. Now if you're falling in such a way that your foot goes like this or like this. Now any normal knee guards or riding pants, they don't have any kind of what do you say, this bend protection. What gives that is leg braces, knee braces. Knee braces do come expensive, but you can go for those when you have started proper hardcore off-roading, be it enduro, be it rally style, whatever it is. But the moment you are able to realize that now I can go faster on off-roads, that's when you get a nice knee brace. I have one from RXR. It cost me somewhere around 20,000-30,000. I got it from MX store. They have a Labs, Lazy Ass Bikers in Mumbai. Then MX store, they have a very good collection and options for knee braces. Acerbis वगैरह के भी हैं, Leat के हैं, Z frame, X frame, all good options. Cost में vary करते हैं depending on what your budget is, depending on what your way of riding is. Go for those. For touring, normal riding pants suffice आराम से. I have these Solace ones and they're very comfortable. They have enough ventilation to keep
everything cool, whatever needs to remain cool, because and whenever I'm feeling a bit hot down there, I just stand up for maybe 5-10 seconds and ride, and then it just cools everything off in the background. I have crashed in this Solace riding pant once at the speed of nearly 90. एक stitch तक नहीं निकला. That's the quality that I go for. That's why I vouch by Solace, because so this is essentially all about riding gear, about why it's needed, when to upgrade, and when not to waste money. Don't go for the most expensive helmet or the most expensive jacket out there or the most expensive gloves just after you started riding. पैसा है खर्चा करने का, ठीक है करो, but for those of us who come from a normal middle class family with a median income, think about it. Don't just buy because of societal pressure. Don't just buy because of peer pressure. Think about the kind of riding you want to do. Think about the kind of riding you like. Think about a lot of stuff. Discuss about it with people. Discuss about it with experienced riders. Research about it, and then go ahead and make a decision about if you need to upgrade or not. Just because आपके दोस्त ने एक 60,000 का हेलमेट खरीद लिया है, आपको भी खरीदना है ऐसा जरूरी नहीं है. Think कि the primary factor of it should not be कि अरे हेलमेट बड़ा मस्त दिख रहा है खरीद लेता हूँ. No, primary factor should be like कि अरे मेरा वाला खराब हो रहा है क्या, shall I go for the better one, या फिर my skills have now increased to such a level that this helmet would not suffice in case of a crash. So let's go for a better helmet. That's how I went with things. That's how step by step. ये सब एक दिन में नहीं खरीदा है मैंने, right? ये knee brace वगैरह सब एक दिन में नहीं खरीदा है. I've talked to people about it for months before deciding on which one to buy. I've researched about it myself, not via influencer के videos. That's something I will recommend against. Now Motozumur Yasser, not just because he's a friend, but he has done a ton of research and he is not bought by any brand. Sponsored करता भी है तो बोलता है कि भाई sponsored है ये वाला. That's why I can trust his reviews of gear. But best would be to do your own research, go to different websites of gear, find out about stuff, Google about it, find out which level of protection is better, why is it better, why isn't it better. Consider all these factors before making a decision कि हाँ भाई अब मैं upgrade कर लेता हूँ gear. First upgrade that is necessary, definitely necessary, is the moment you go from a commuter rider to a professional rider, or not a professional rider as well, but a tourer. जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हो कि अब हमको थोड़ा दूर जाना है, multiple days, you have a single day be 500-600 kilometers, wherein your speeds will touch 100 and 110. Yeah. During that time, that first upgrade is very necessary. There's no doubt about it. उसके बाद का क्या करने का? उसके बाद का depending on your skill, depending on your type of riding, जैसे जैसे increase होता रहेगा, simple वैसे वैसे आप अपना gear upgrade करते रहिए, right? यही खत्म करते हैं 4th episode अपना, and next episode we will get into a nice topic, and it's a debate worthy topic that everyone debates about. I am a bit biased towards one side. The topic is solo versus group rides. I am biased towards solo rides, and अगले episode में आपको पता चलेगा why I am biased towards solo rides and why I personally love solo rides. Group rides are very good. They are very enjoyable, absolutely. But there are certain reasons, personal reasons, why I like solo rides much more. कल बात करते हैं इस पे. कल नहीं, sorry, next episode पे. चलिए मिलेंगे फिर. ना 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 ना.